Okay, see here. While talking about the pituitary gland, I told you about, we had drawn this imaginary line circle. I told you this was the diencephalon, right? And what is the floor of the diencephalon? The floor of the diencephalon is called hypothalamus. And beneath the hypothalamus, we had said that there is a gland which is called the pituitary gland. And on the dorsal side, so what are we calling it? Dorsal side. On the dorsal side, there is what? Pineal. So if you see the NCERT, it is mentioned that the pineal gland is located on the dorsal side of the forebrain. So where is the pineal gland located? Dorsal side of the forebrain. For many years, it was a gland of much debate and research. Okay, where many of the physiologists, they used to say that there is a lot of role to play in the sexual cycle of animals, and that is very true. Okay, all the functions that we are going to talk about are going to be related to the hormone melatonin that is secreted by the pineal gland. What's the name of the hormone? Melatonin. Okay. Some known functions of melatonin are that melatonin influences the diurnal rhythm of the body. Okay, we all follow sleep-wake cycle. Okay, especially as you age, and if you are used to sleeping at one time, getting up at one time, eventually वही time पे आपको नींद आएगी और वही time पे आप उठोगे. Especially अगर आपने parents या अपने grandparents को देखते हो, अगर उनको सुबह 5:30 या 6 बजे उठने की आदत है तो ऑफिस है, नहीं है, काम है, नहीं है, फिर वो लोग वही टाइम पे सोते हैं, वही टाइम पे उठते हैं. बराबर है? Because that is how the sleep-wake cycle or their diurnal rhythm has been set. Okay, it is known that जैसे जैसे रात होती है और जितना ज़्यादा अंधेरा होता है, वैसे वैसे melatonin का production rise होता है. So it is one of those hormones that helps you to sleep. Okay, and early in the morning now the synthesis will start decreasing. Okay, that is why I think so I told you before also. Okay, some of the top athletes, they like Ronaldo and all, वो लोग कोई भी मोबाइल फोन या कोई भी गैजेट सोने से 1.5 घंटा पहले नहीं देखते. कि जितना वो स्क्रीन का लाइट आपके आईज में जाएगा, which are connected to your brain only directly, melatonin का production will decrease. As a result of which आपकी sleep भी complete नहीं होगी, and जो fresh feeling आना चाहिए sleep के बाद वो भी आपको नहीं मिलेगा early in the morning. You'll be irritated. Okay, so melatonin is controlling your sleep-wake cycle. It is controlling your diurnal rhythms. Did you get my point, everyone? Yes. Also, it has been observed that now this is very true for the seasonal breeders. Okay, like there are some animals who live in cold areas where the winter has snowfall. Winter can be for 4 months, 5 months. Okay, and they don't breed during those months. और वो महीनों में हम देखेंगे कि दिन जो होता है वो छोटा होता है, नाइट बड़ी होती है, तो उनके बॉडी के फीमेल्स की बॉडी में मेलाटोनिन का प्रोडक्शन क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा. एंड हाई मेलाटोनिन उनकी एफएसएच की एक्टिविटी को कम करता है. ओवरीज नया एग नहीं बनाते, वो लोग ब्रीड नहीं करते, तो ज्यादा मेलाटोनिन होने की वजह से उनके गोनाड्स के ऊपर एक नेगेटिव इनहिबिशन आ जाता है. और उसका फायदा उनको ये होता है कि विंटर सीजन में अगर वो ब्रीड करते तो बर्फ में ना खाने के लिए कुछ बराबर से
और एनवायरनमेंट बहुत हार्श है, the kids would die in the cold winters. I have got my point. Even in human females, it has been seen that those females who are born blind, okay, मतलब बचपन से उनको लाइट का समझ नहीं है, क्या लाइट है ब्रेन को मालूम नहीं इतना, ओके, तो आपका अंदाजा क्या है कि उनका जो मेंसेस है, जिसको हम लोग मेनार्क बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो शुरुआत है, वो उनके लाइफ में लेट होगा कि जल्दी होगा? लेट होगा कि जल्दी होगा? नॉर्मली 13 की एज में आता है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर दो इनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है कब स्टार्ट होगा? तो 13 साल के पहले कि उसके बाद? उसके बाद, क्योंकि उनका मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कम कैसे? फिर क्या आंसर देगा? कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा? क्यों? लाइट नहीं है, डार्कनेस ज्यादा है, तो मेलाटोनिन का प्रोडक्शन विल बी मोर, सो दे यूजुअली have their first menarche at the age of around 18 to 19 years. तो काफी लंबा समय हो गया आपको। अगर नॉर्मल 12-13 साल में मेंसेस आते हैं तो इनको 18-19 साल का है। आया बात समझ में? इसका मतलब ये है कि it is influencing even the menstrual cycle. It also has an influence on skin pigmentation. Skin pigmentation. Like if you remember, in the pituitary gland, we had spoken about melanocyte stimulating hormone. क्या था बात उन्होंने? Melanocyte stimulating hormone ये सेल्स पे, स्किन सेल्स वगैरह पे काम करता है, तो कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? मेलानिन। मेलानिन क्या करता है? हमारी स्किन को डार्क करता है, पिगमेंटेशन। मेलाटोनिन उल्टा, इट इज फॉर फेयर स्किन, मतलब मेलाटोनिन विल मेक योर स्किन लाइटर इन कलर. That is why if you see people living in cold regions have more amount of melatonin, okay, and a fairer skin comparatively to their tropical counterparts. मतलब जो लोग अपने ऐसे एरिया में रहते हैं, बराबर? हम भी अगर उधर माइग्रेट हो गए तो हम भी थोड़े से क्या बनेंगे? फेयर, बट नॉट एज अ व्हाइट अमेरिकन. लेकिन हमारी भी स्किन फेयर क्यों होगी? क्योंकि एनवायरनमेंट के हिसाब से मेलाटोनिन का प्रोडक्शन विल बी मोर अफेक्टिंग आवर स्किन color. Did you get my point, everyone? Yes. Okay. It also influences your body temperature and the defense capabilities of the body. It influences metabolism, so it is influencing the body temperature as well as immune system, that is the defense capabilities. So these all together are the functions of which hormone? Melatonin. Can you summarize them? What was the first one? It influences your diurnal rhythms. मतलब these are the 24-hour cycles, like the sleep-wake cycle. Okay? Melatonin production in darkness बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है. It keeps you awake or it helps you to sleep? There. Then what are the other functions we mentioned? Does it influence your body temperature? Yes. Yes. Does it influence the defense capabilities? Yes. Yes. Immune system. Then it affects your skin color. So we call it a skin pigmentation. Then also influences the menstrual cycle and cellular metabolism. Also influences the metabolism. आया समझ में सबको? Are we clear with this point, everyone? Yes. Okay. वो सेलुलर मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, कम करता है. बढ़ाता है. Okay. Wait for 2 minutes. What? Okay, now we'll talk about pancreas. Okay. What is the location of the pancreas?
here. So below the stomach, the C-shaped part of the small intestine is called duodenum. क्या कहते हैं इस part को? Duodenum. Okay. And in the concave part, duodenum के ये वाले part में, there is this very important endocrine gland. Okay. What is the name of this gland? Pancreas. So where is the pancreas located? It is located below the stomach, in the C of the duodenum. It is located below the stomach, in the C part of the duodenum. Okay? We say that pancreas is a composite gland. Majority of the pancreatic tissue is exocrine tissue, and only a small part of the tissue is endocrine. You know the difference between exocrine and endocrine. So it has both the parts, exocrine part and the endocrine part. And the exocrine part is about 98 to 99% of the pancreas, whereas the endocrine part is only 1 to 2%. Okay? So majority of the pancreas is exocrine function. So if you take a TS of the pancreas, TS means what? Transverse section of the pancreas. It shows the presence of these exocrine parts, which are called acini, pancreatic acini. And these acini, they secrete pancreatic juices, and they help in the process of digestion. Okay? So ये जो pancreas का acini वाला part है, उसको हम लोग कौन से part में consider करेंगे? We'll consider it in which part? Exocrine part. Okay? And rest here between the acini, we see the presence of connective tissue. Okay? And this connective tissue shows the presence of cells called islets of Langerhans. आइलैंड्स का मतलब होता है आइलैंड. आइलैंड तो सुना आप लोगों ने? आइलैंड मतलब एक जमीन जिसके चारों तरफ क्या है? पानी है. तो ये जो सेल्स है इसके चारों तरफ क्या है? कनेक्टिव टिश्यू. लैटिन में आइलैंड को हम क्या कहते हैं? आइलैंड्स. और Langerhans is the name of a person. So these are called islets of Langerhans, which is made up of many different types of cells, like alpha cells, beta cells, delta cells, etc. Okay? Of which NCERT has mentioned two types: alpha cells and beta cells. And alpha cells, they secrete a hormone which is called glucagon, and beta cells secrete a hormone which is called insulin. So what are the two hormones secreted by the pancreas? Glucagon and insulin. Alpha cells secrete and beta cells are going to secrete what? Insulin. As समझ में आता है सबको? What do alpha cells secrete?
What do beta cells secrete? Insulin. Now, so let me say that these are the alpha cells, and nearby we have the beta cells. Let us assume that you are undergoing starvation. Starvation मतलब जब आप काफी टाइम तक खाना नहीं खाते, ओके, तो उस कंडीशन को क्या हम लोग बोलते हैं? स्टार्वेशन। ऐसा कभी होता है 24 आवर्स में बच्चों? सुबह उठने के बाद ऑलमोस्ट 6-7 घंटा आपने कुछ भी नहीं खाया, मतलब आप क्या हो? स्टार्व। तो अर्ली मॉर्निंग में भूख लगती है कि नहीं लगती? क्योंकि ब्रेन के हंगर सेंटर स्विच ऑन हो जाता है, ओके। या ऐसे भी अगर हम लोग फास्ट रख रहे हैं, ओके, तो हम लोग जब हमने खाना नहीं खाया तो स्टार्वेशन चल रहा है, तो वो टाइम पे आपके ब्लड के अंदर का शुगर लेवल्स, ग्लूकोज लेवल ज्यादा रहेगा कि एकदम कम रहेगा? तो उस सिचुएशन को कहते हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड hypoglycemia. What do you call the condition? Hypoglycemia. Hypoglycemia. Hypo मतलब less, glycemia मतलब glucose. Okay? And when this situation arises, that is hypoglycemia, the alpha cells secrete a hormone which is called as glucagon. Which hormone is secreted? Glucagon. ठीक है? So when the body is starving, or for any other reason, the blood sugar levels are low, the alpha cells will start secreting what? Glucagon. Now glucagon will act on the liver. The cells of the liver are called hepatocytes. Hepatic, ये किसके लिए वर्ड यूज किया जाता है? लिवर के लिए। तो हेपेटोसाइट्स ये किसके सेल्स है बच्चों? लिवर के सेल्स। सो अभी ग्लूकागॉन ने किसके ऊपर एक्ट किया? लिवर सेल्स के। क्यों एक्ट किया लिवर सेल्स के ऊपर? कि पूरी बॉडी में लिवर एक ऐसी जगह है जो ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। सो आपके लिवर में क्या स्टोर है बच्चों? ग्लाइकोजन स्टोर। ओके, नाउ it will act on the hepatocytes and do glycogenolysis. What is the meaning of word lysis? ब्रेकडाउन। किसका ब्रेकडाउन हो रहा है? ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तो क्या फॉर्म होगा? ग्लूकोज। I have told you yesterday also that glycogen is a big molecule. It gets broken down into smaller molecules of glucose, and that process is called what? Glycogenolysis. क्या कहेंगे उस प्रोसेस को? Glycogenolysis. The other thing it can do is, you know this word also, gluconeogenesis. Genesis means formation. Neo means new. So there is formation of a new glucose, which is called as gluconeogenesis. And liver will release this glucose in the blood. So there will be release of sugars in the blood. So now you tell me, blood sugar levels will decrease or increase? Increase. Who has increased it? The hepatocytes. Under the influence of glucagon. Can I say this will be called hyperglycemia? क्या कहेंगे उसको? Hyperglycemia. Okay. So then tell me, so what should I call glucagon? Hypoglycemia hormone or hyperglycemia hormone? Hypo ki hyperglycemia?
हाँ, कल ही सिखाया था ना आपको। अब इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? हाइपरग्लाइसीमिया। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया, बराबर है? तो हाइपरकैल्सीमिया कब बोला था हम लोग? कौन सा हार्मोन को बोला था? पीटीएच को, क्योंकि वो कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ाता है। क्या देखना रहता है? जो फाइनल इफेक्ट रहता है वो, कि जिसके वजह से वो रिलीज हुआ हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट्स अ हाइपरग्लाइसीमिया। क्लियर हो गई मेरी बात? ओके। सो व्हेन योर बॉडी इज सफरिंग फ्रॉम hypoglycemia, your alpha cells will secrete glucagon that will cause glycogenolysis and gluconeogenesis in the liver. Liver will start releasing sugars in the blood. Blood sugar level will increase. That condition is called hyperglycemia. Okay? So what will happen if you have a very heavy meal? Okay, if you have a very heavy meal, okay, your blood sugar levels will increase, and what is that called? Hyperglycemia. Okay, जब हम लोग खाना खाते हैं या कुछ भी शुगरी खाने के बाद हमारा ब्लड शुगर लेवल क्या हो गया? बढ़ गया, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। अब बीटा सेल्स क्या सिक्रीट करेगा? चलो, इंसुलिन सिक्रीट करेगा। व्हाट माय पॉइंट? मतलब अब जो इंसान का ब्लड है उसके अंदर समझो ये सर्कल्स ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है? इंसुलिन कैन एक्ट ऑन योर hepatocytes, on your adipocytes, as well as your which cells? Muscle cells. ठीक है? आया ना? Your body cells show the presence of special proteins which are called insulin receptors. सेल मेम्ब्रेन पे क्या होता है? इंसुलिन रिसेप्टर्स, ठीक है? Yes. एंड ग्लूकोज को सेल मेम्ब्रेन अंदर जाने नहीं देता है, ये हमको पता है। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैरियर प्रोटीन्स। बोलते हैं ना कैरियर प्रोटीन्स या टनल प्रोटीन्स, जिसके थ्रू ये अंदर जा सकता है थोड़ा सा। बट ऑलरेडी अभी ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा है, हम चाहते हैं कि सेल्स को ये ग्लूकोज मिले ताकि वो दे कैन यूज इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फॉर दैट, अब देखो, insulin as a hormone will bind to the insulin receptors. I call it as a doorbell effect. What do I call it? Doorbell effect. Doorbell effect. मतलब as soon as you ring, आप डोरबेल बजाते हो दरवाजा खुल जाता है। वैसे ही इंसुलिन जैसी रिसेप्टर्स को बाइंड होता है, अंदर से न्यूक्लियस आवाज दे देता है कि नए वाले प्रोटीन्स बनाओ जो बहुत इंसुलिन, जो बहुत ग्लूकोज को अंदर ला सके, जैसे कि GLUT4 हो गया बच्चों। हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं कि GLUT4 इज अ इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो जैसे ही GLUT4 बनेंगे और दूसरे मॉलिक्यूल्स बनेंगे, फटाफट ग्लूकोज कहाँ आएगा बच्चों? सेल्स के अंदर। अब सेल्स ग्लूकोज को स्टोर भी करके रखेंगे, किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन। जिस तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी कम है, खाना खा लिया तुमने, सेल को उतना जरूरत नहीं है भाई, क्या करेगा इसका भी? वो
स्टोर करेगा। कौन से फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? लिपिड के फॉर्म में। तो इमेजिन करो एक बच्चे के बारे में जो डेली शुगर स्पाइक लेते रहता है, या एक अडल्ट के बारे में जो डेली शुगर स्पाइक्स लेते रहता है, चॉकलेट्स, केक्स, लड्डू, व्हाट माय पॉइंट, अनवांटेड कार्बोहाइड्रेट्स लेते रहता है, तो उसका इंसुलिन का प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? ज्यादा रहेगा। और वो इंसुलिन ज्यादा जो रहेगा उसके से ग्लूकोज जाएगा सेल्स के अंदर। अब उसके बॉडी को उतना ग्लूकोज का जरूरत है कि नहीं है? तो वो पूरे ग्लूकोज को किस में स्टोर कर रहा? फैट्स में स्टोर करेगा, ग्लाइकोजन में स्टोर करना स्टार्ट करेगा। तो उसका वेट क्या होगा? ओबेसिटी स्टार्ट होगी कि उसके अंदर। व्हाट माय पॉइंट? ओके, क्यों? क्योंकि इंसुलिन का क्या रोल है यहां पे बच्चों? It allows the entry of glucose into the cells. Allows मतलब it will help the entry of glucose into the cell, and it will promote glycogenesis. मतलब it will help in the formation of glycogen, and it will slow down glycogenolysis. ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन क्या करेगा? कम। मतलब ओवरऑल इंसुलिन की वजह से ब्लड के अंदर का ग्लूकोज लेवल बढ़ते गया कि कम होते गया? कम होते गया। तो उसको क्या कहूं मैं? I'll say that blood sugar levels will fall, and that condition is called hypoglycemia. So insulin is which hormone? Hypoglycemia hormone. अब उसी पर्सन के पास आते हैं जो शुगर और ये वो खाते ही बैठा है। By the time he reaches a particular age, वो भी बहुत फैट हो चुका है, तो उसके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल कम है कि बढ़ गए? तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी, विस्कस हो जाएगी, और विस्कस मेम्ब्रेन के थ्रू ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट डिफिकल्ट हो जाएगा। आया ना? तो क्या ग्लूकोज अंदर जा पाएगा सेल के अंदर? नहीं। अब पैंक्रियास को ये तो बात मालूम नहीं है, उनको बताया जाएगा कि और इंसुलिन बनाओ ताकि ग्लूकोज के सेल के अंदर जाए। तो पैंक्रियास क्या करेगी? इंसुलिन का प्रोडक्शन कम करेगी, बढ़ा देगी? बढ़ा देगी, क्योंकि सेल को तो ग्लूकोज चाहिए। अब ऐसा करते करते पैंक्रियास एक टाइम पे क्या हो जाएगा? थक जाएगा, बोले बस हो गया भाई, इससे ज्यादा मेरा कैपेबिलिटी नहीं है इंसुलिन बनाने का। तो डोंट यू थिंक द बीटा सेल्स विल स्टार्ट लूजिंग देयर एबिलिटी नाउ, बिकॉज़ नाउ दे आर ऑलरेडी fatigued of insulin production. So now over a period of time insulin ka production will decrease, blood sugar levels will increase, but glucose is absorbed in the PCT. आया ना? लेकिन वो भी पर्टिकुलर लिमिट तक ही होगा। अब PCT के बोले भाई मैं कितना ग्लूकोज एब्सॉर्ब करूं? हाँ चलो वो कर रहा है, लेकिन ब्लड क्या बोलेगा? भाई मैं फुल, ऑलरेडी मेरे अंदर ज्यादा ग्लूकोज है। कौन बोल रहा है? ब्लड। तो व्हाट विल द पीसीडी डू? विल इट डू रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज और विल इट डू एलिमिनेशन ऑफ ग्लूकोज? सो विल योर पेशेंट शो द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन हिज यूरिन? यस। दिस शोज दैट उसके बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा हो गया क्योंकि उसका इंसुलिन। So will his urine be sweet in taste? Yes. So what should I call it? Diabetes mellitus. So there will be deficiency of insulin that will cause a complex disorder which is called as what, Chilo? Diabetes mellitus. Sir, काफी सारे complications हैं। Basic तो आपको यही समझ में आया कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, लेकिन सेल उसको खा पा रहे हैं? नहीं। ये तो वो बात होगी कि प्योर वेजिटेरियन आदमी को मैंने मेरे घर पे खाना खाने बुलाया और उसके सामने चिकन तंदूरी रख दिया, खा पाएगा वो? नहीं। तो इंसुलिन नहीं होने की वजह से, इंसुलिन कम होने की वजह से सेल्स को दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करने पड़ेंगे,
जिसे फैट्स वगैरह ब्रेक होगा तो टॉक्सिक बॉडीज आपके ब्लड में रिलीज होगी, लाइक कीटोन बॉडीज, जिसके वजह से आपका जो बदबू आएगा मुंह से एसीटोन का डायबिटिक पेशेंट में। यूरिनेशन बहुत फ्रीक्वेंट हो जाएगी, रात में 2-2 3-3 बार क्या होना पड़ता है, कुछ लोग सुसु करना पड़ता है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। इससे बहुत सारी चीजें हैं। ग्लूकोमा होगा, आई की कैपिलरीज डैमेज होती है, उसमें आदमी अंधा हो सकता है उसके अंदर। किडनी फेलियर होता है, ओके। वाइट ब्लड सेल्स कैपिलरीज के बाहर नहीं आ पाती तो वुंड हीलिंग कम हो जाता है। कंडक्शन ऑफ इंपल्स में प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से जो हाथ पैर के एंड है वहां से सेंसेशन नहीं आ पाते पेन के ब्रेन की तरफ, तो इनको खिलना लग जाता है, कुछ भी लग जाता है, गरम झटका आता है, फिर भी समझता नहीं है। इसे देखो, जो पेशेंट को डायबिटिक फुट होता है, इतने बड़े बड़े पैर होते, खड्डे होते, उसके अंदर से कॉटन से क्लीन कर देते, कुछ उसको फर्क नहीं पड़ता। ऐसे इट्स नॉट वन symptom, there are multiple complex symptoms which is called as a disorder called diabetes mellitus. Always feeling thirsty, frequent urination, अचानक से भूख बहुत लगना, ठीक है। तो we successfully treat such people with biotechnologically produced insulin, and that is called what Uchlo? Insulin therapy. Have you seen a diabetic patient carrying a chocolate in his pocket? Yes. No? He usually carries a chocolate in his pocket. And why is that? उसको तो चॉकलेट नहीं खाना है कुछ लोग। कभी कभी इंसुलिन का लेवल अचानक से स्पाइक होता है, तो ग्लूकोज का लेवल अचानक से क्या होगा? कम, एंड हाइपोग्लाइसेमिक कोमा हो सकता है। लेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज की वजह से ब्रेन कैन एंटर इनटू अ स्टेट ऑफ कोमा। Okay, so you should remember this. Okay, the best thing is you should try to prevent diabetes concept by leading a healthy lifestyle. Walk, run, any form of physical exercise. What my point? And restrict the amount of processed sugars in your diet, like that white sugar and all. वो processed sugar नहीं खाने का. Okay, what we can have is our natural sugars that we get. Good, that is Chendriya good is still better, but chalo. Gold powder. Whatever it is, good powder can be there. Multiple चीजें हैं, बराबर है। या हमारे जो घरगुती जो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस होते हैं, अलग अलग टाइप के जो ग्रेन्स हम लोग खाते हैं, नाचनी ये वो। What my point is, they're much better. But the problem is India is becoming a diabetes capital of the world because now we are also eating a lot of processed food. समझा मेरा बात? Why do you like all this Coca-Cola and all that? They all have got those processed sugars in it. Coca-Cola ने तो कुछ और दूसरा अच्छा लगता रहेगा, कुरकुरे, चुरकुरे, मुरकुरे और ये सब जो खाता था। नहीं, कुछ नहीं खाता। तो एकदम सती सावित्री हो, उसके बाद हरिश्चंद्र, है ना? वैसे एकदम पाक